following the massacre of as many as 8 people. There's been an extremely incriminating finding on the part of the team looking into the post-mortem of what exactly happened and the charred bodies that were unearthed after that massacre. And the post-mortem report now reveals that the victims were badly beaten up before they were burnt alive. Let me go across to Tanushri for more updates on this. Tanushri, the post-mortem report, of course, pointing out now, and this completely disproves the claims made by the TMC's Anubrata Mondal that this could have been a consequence of a short circuit. The post-mortem clearly says that the victims were beaten up before they were burnt alive, proving the conspiracy angle in this matter, that this was a carefully premeditated attempt. Well, certainly the forensic experts who had done the post-mortem, they have submitted a report stating that those who were murdered, they were badly beaten before the bodies were burnt and charred to death. But certainly hospital sources are stating the same thing, that the bodies were badly beaten up. There are injury marks in the bodies. That is what we are getting to know from hospital sources. Certainly this disapproves of Anubrata Mondal, the Birbhum TMC president's statement that there was a short circuit and the houses caught on fire. Certainly this theory of his is now not going to stand anymore, but the post-mortem report as per hospital sources is that the bodies were badly beaten up before they were burnt to death. Right, let me take this across to Tamal as well. Tanushri, Tamal, this is a big setback to certain claims that were being made by within the ranks of the TMC, no less than the district president of Birbhum, Mr. Anubrata Mondal himself, that the fire could have been a consequence of a short circuit. But what the post-mortem report indicates is that this was a premeditated attempt to avenge what had happened with regards to the murder of the TMC Panchayat leader. Well, we have been reporting since yesterday as there are certain disconnect in the statements which have been made so far, and most importantly, having visited the ground, and from ground we have shown as how the house, which was big but not big enough for anyone not to make an attempt to escape, when the bodies are on fire, their self bodies are on fire, is a question that has come before the investigating agency as well, as what made them stay back in the house when the house was on fire. So to which the post-mortem assessment indicate that either they were badly assaulted, before they were put on, the bodies were put on fire. In fact, I'll just turn my camera and give you a glimpse. There are a lot of activities now here. Senior police officials are all coming down to the spot because Mamata Banerjee would be arriving here any moment. In fact, these are all senior police officers who are now taking charge of the spot, so that before the Chief Minister comes, they are in control of this place which has seen mindless violence on Monday night. So yes, there are activities here, but to come back to your question, yes, it's a fact that the post-mortem indicate that the individuals who were there inside the house, they were assaulted, and possibly that's what had in a way impaired their mobility to an extent that when their bodies were on fire, they could not do much, because even the locals said that they could hear people scream. Right, Tamal, let me also take this across to Pulkit Nagar, who's also joining us. Pulkit, Mamata Banerjee कुछ ही देर में बिरभूम पहुंचने वाली है, लेकिन ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के फाइंडिंग्स हैं वो काफी इंक्रिमिनेटिंग है, और जो भी अटेम्प्ट्स है टीएमसी के द्वारा इसको प्ले डाउन करने के लिए उनको ये क्वॉश कर देती है. आपने बिल्कुल ठीक कहा, और तस्वीर कुछ और भी मैं दिखा देता हूं किस तरीके की ममता बनर्जी यहां पे पहुंचेंगी. और ये बहादुर शेख का घर है. इससे पहले आप देख रहे हैं कैसे सैनिटाइज किया जा रहा है, व्हाइट तौलिए बिछाए जा रहे हैं कुर्सी पर, परिवार को इकट्ठा करके एक जगह बैठा दिया गया है ग्रीन कारपेट के ऊपर, और यहाँ पर ही ममता बनर्जी को थोड़ी देर में पहुंचना है. तो एक अलग तरीके का माहौल है. ये परिवार बहादुर शेख का थोड़ी देर पहले यहाँ पर नहीं था, थोड़ी देर पहले यहाँ पहुंचा, और जब से ही पिछले 1-1.5 घंटे से इसे इसी तरीके से, यानी कि जो
पीड़ित परिवार है उसे इसी तरीके से इकट्ठा कर कर बैठाया के रखा हुआ है। सामने आपको व्हाइट टॉवल से बनी हुई 3-4 चेयर दिखाई देंगी जिसे लगातार सैनिटाइज किया जा रहा है और यहाँ पर ही ममता बनर्जी को थोड़ी देर में पहुंचना है। दूसरी तस्वीर में आपको ये दिखाऊंगा जब कैमरा पीछे जाएगा कि पूरा बैरिकेड कर दिया गया है ये इलाका। Stay on the line with us. There's also been a very important reaction that's come in from the BJP in the build-up to Mamata Banerjee's visit to Birbhum, with the BJP Shehzad Poonawala putting out a tweet referring to a certain poster that's been put up in Birbhum in the build-up to her visit, saying, "Is this how Mamata Didi is being welcomed? She's going there for condolences and ensuring justice, or for victory celebrations." Now, this is the claim being made by the BJP in relation to certain posters that have come up in Birbhum to welcome Mamata Banerjee during a visit. Pulkit, well, in fact, let me go across to Shehzad. For this, Shehzad, of course, the BJP reacting very strongly because Mamata Banerjee is duty-bound to be visiting Birbhum, but it's almost as if her supporters are trying to make this out to be some kind of a victory procession. Absolutely, and if I could describe this in one word, it would be called Nirmamta. This is the Nirmam chehra and face of Mamata Banerjee. Yesterday, you know, Siddharth, she made this very insensitive comment of comparing the deaths, the brutal deaths of 8 people with a sneeze. And today she is having her party workers facilitate her and felicitate her as if she's going on a Vijay Yatra or some kind of a victory procession. This is not a time for celebration. It is a time for contemplation. It is a time for condolence. It is a time for giving justice to the victims. And now, with the manner in which the entire police has acted, Times now has put out last evening, I was seeing Rahul Shivshankar's show, and he has shown how 90 minutes the state just abdicated from its responsibility. Now, can you trust the SIT to do a free and fair probe when the state and the police itself is a guilty party? Can you have any faith on this SIT? This is going to just be an exercise in cover-up, and therefore the court is also not taking this in a manner, and they have asked for strict directions to be given in the 2021 post-poll violence case. Also, the manner in which the state behaved and supported the criminals instead of standing with the victims is before us. This SIT evokes no confidence, and Mamata Banerjee's asamvedanshilta, her nirmam chehra, is also out in the open. Right, Shehzad. In fact, questions have also been raised by the petitioners who've approached the Kolkata High Court about the antecedents of some of the members of the SIT. And of course, the court will be hearing this matter once again at 2 p.m. today. So we look forward to that. Let me go across to Pulkit once again. Pulkit, क्या आपने भी ये पोस्टर्स देखे बिरभूम में और ममता बनर्जी अभी थोड़ी देर बाद पहुंचेंगी वहां पर? क्या इस तरह के विक्ट्री प्रोसेशन वाले सेलिब्रेटरी पोस्टर्स वहां पे लगाए गए हैं? देखिए, जब आप मेन हाईवे से गांव की तरफ बढ़ते हैं तो आपको कुछ रास्ता पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप टीएमसी के झंडे, ममता बनर्जी के पोस्टर को फॉलो करते रहिए और आप सीधा यहां पर पहुंच जाते हैं। तो वो बताता है कि कैसे पूरे रास्ते को बैनर और पोस्टर से भर दिया गया है और सीधा यहां तक जो आप देख रहे हैं, जहां विक्टिम का परिवार है, अधिकारी लगातार एक एक चीज को चेक कर रहे हैं। अगर सवाल यही है कि अगर यही एक्टिव रवैया उस दिन अपनाया जाता है 21 तारीख की रात को, तो शायद यहाँ पर इस तरीके के हालात नहीं होते कि लोगों को अपने घर छोड़ के जाना पड़ता है। साथ में जहाँ पे ममता बनर्जी पहुंचने वाली है, उसी के घर के बगल वाला घर देखिए कि आपको यहाँ पे ताला लगा हुआ नजर आएगा। दूसरी चीज और मैं जो एक आपको तस्वीर दिखाने वाला हूँ, वो और हैरान करती है कि ये घटना जो है वो 21 तारीख की है और 21 तारीख से लगातार जिस तरीके की खबरें यहां से निकल कर आ रही थी, वो सरकार को लेकर कई सवाल खड़े करते थे। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही वाटर कैनन यहां फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहां पर पहुंची और यहां से जो घर जले हुए थे, फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने यहां पर आकर अब थोड़ी देर पहले आग को बुझाया है। 21 तारीख से लेकर आज 24 तारीख है, तो अब जब फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहां आती है तो ये सवाल उठते हैं कि आखिर इतनी देरी प्रशासन को क्यों समझने में लग जाती है कि आप जहां पर आपको एक्शन लेना चाहिए वहां आप एक्शन नहीं ले रहे। ये मिट्टी देखिए, अभी भी पूरी मिट्टी आपको यहां पर इन घरों के बाहर की गीली नजर आएगी। थोड़ी देर पहले इन्हें यहां पर वाटर फायर की गाड़ी पहुंची है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची है, उसने आग को बुझाया। तो ये तस्वीरें हैं गांव में, घर खाली पड़े हैं, घर के बाहर ताले लटके हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ी अब पहुंचती है, आग जो लगी हुई है उसे बुझाती है ममता बनर्जी के आने से मात्र 2 घंटे पहले। जी। और पुलकित, हमें वहां के माहौल के बारे में जरा बताइएगा। वहां के नागरिक क्या ममता बनर्जी से मिलना चाहते हैं? उनकी क्या शिकायतें हैं प्रशासन के खिलाफ? वो क्या बोलना चाहते हैं ममता बनर्जी को जब वो उनसे मिलेंगे?
बंद पड़ा है। पूरा गांव पूरी तरीके से खाली है। हर घर पर ताले लटके हुए हैं। मैं आपको घरों की तस्वीर दिखा देता हूं। पहले मैं आपको ये बैरिकेड दिखा देता हूं जो ममता बनर्जी के लिए पूरा ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। इससे आप लांग कर दूसरी तरफ नहीं जा सकते, चाहे आप जर्नलिस्ट हैं चाहे आप आम लोग हैं। बाहर कुछ लोग आपको खड़े हुए नजर आ जाएंगे। इसके अलावा घर के बाकी हिस्सों, पूरे गांव के बाकी हिस्सों की अगर आप तस्वीर देखेंगे मेरे साथ, तो आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से कि मुख्यमंत्री यहां पर आ रहे हैं, यानी कि इस प्रदेश की सबसे बड़ा चेहरा, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में सुरक्षा का भाव नहीं है। लोगों में यह भाव नहीं है कि वो अपने घर वापस लौट जाएं। आपको घरों की तस्वीर में दिखाता हूं कि किस तरीके से आसपास के घर जहां पर ममता बनर्जी पहुंचने वाली हैं, उसी के बगल के दूसरे हिस्से के घर पे ताले लटके हुए हैं और उसी दिन से लोग यहां से अपना घर छोड़कर गए हुए हैं। जानवर आपको घर के बाहर नजर आ जाएंगे। अब आप घर गिनना शुरू करेंगे तो आपको नजर आएगा, देखिए ये घर का ताला बंद है, इसी का दूसरा ये ताला देखेंगे तो ये भी पूरी तरीके से बंद है। अब आप इधर देखेंगे, ये जहां ममता बनर्जी आने वाली है वहां सुरक्षा का अभाव आप समझ सकते हैं। ये देखिए घर के बाहर ताला लटका हुआ है। अब आप यहाँ पे दूसरा एक बड़ा घर देखिए जहां पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं, यानी कि ये बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकते थे अगर इनकी फुटेज मिल जाती। ये घर का पहले ताला देख लीजिए, यहाँ घर के बाहर ताला लटका हुआ है, यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। ये सीसीटीवी कैमरा ठीक उस घर पर है जिसकी तस्वीरें मैं आपको अभी दिखा रहा था कि उस घर के ऊपर फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने अभी जाकर आग को थोड़ी देर पहले बुझाया। तो गांव में जब मैं घूम रहा हूं तो गांव में लोग नहीं मिल रहे। कुछ लोग आए हैं, उन्हें इकट्ठा कर कर एक जगह बैठा दिया गया। पिछले 1-1.5 घंटे से वो लोग बैठे हैं ताकि जब ममता बनर्जी आए तो उनसे मिले और वो ममता बनर्जी की बात को सुने। ग्रीन कारपेट बिछाया गया जिस पर उन लोगों को बैठाया गया है। वो बहादुर शेख का घर है, उनके परिवार के लोग हैं और ममता बनर्जी के लिए सामने 3-4 कुर्सी बिछा दी गई हैं जो लगातार सैनिटाइज की जा रही हैं ताकि जब वो आए तो आराम से बैठ के उनसे बात हो सके। जी Pulkit, stay with us. We'll slip into a short break. A pall of gloom has descended over the Buktai village in Birbhum where this massacre took place 2 days ago. We'll slip into a short break. We'll come back with more on the other side.